Welcome, student. Okay, let's start another question on based on recoil velocity. Based on recoil velocity. So start writing down the question. A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with velocity 1200 meter per second. 1200 meter per second. The man holding machine gun can exert a maximum force of 144 Newton. 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire? Per second? At the most. So the question has got again 4 answers. 1, second answer 4, third answer 2, fourth answer 3. अब देखिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा लेट मैन फायर्स n bullets per second. Let mass of machine gun is mkg, capital M. Now we'll applying law of conservation of momentum. Mass of gun m, velocity of recoil, let it is vr. There are n bullets, mass of bullet small m, velocity of bullet. So we can write it vb equal to 0. So mvr equal to minus n mb vb upon m. तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं. मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम, 40 by 1000. Velocity of bullet 1200. Velocity of bullet 1200 divided by mass of gun. So
this all 0 will get cancelled. We'll get minus 48 n upon m. That is our equation 1. तो ये देखिए m को हम यहाँ हटा देते हैं, तो ये भी r की वैल्यू है. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे, क्योंकि यहाँ इंस्टेड ऑफ फायरिंग वन बुलेट, n bullets are fired 1 second, so n bullets will gain the momentum in forward direction, and the machine gun will gain the momentum in backward direction. Machine gun will gain the backward direction. ये होता है. This is the case. अब मैन कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ये हमें मालूम है 144 न्यूटन. क्योंकि मशीन गन रिकॉइल करेगी, पीछे हटेगी, विल मूव बैकवर्ड. तो मैन वांट्स टू होल्ड द मशीन गन, डज नॉट वांट दैट मशीन गन शुड मूव बैकवर्ड. तो वो होल्ड करेगा, एक फोर्स अप्लाई करके उसको रोकेगा, और वो फोर्स हमें दिया हुआ है 144 न्यूटन. जैसा कि आप जानते हैं, द फोर्स हैज गॉट अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जो रिकॉइल स्पीड होती है वही एक्सेलरेशन है. तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन में आपको करके बताया था. आर यू डन विद इट? चैट विद मी, तो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं. ओके, ठीक है. तो हमेशा आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक हमें डेवलप कर लेनी चाहिए. ये देखिए ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. ये आ गया हमारा फॉर्मूला. तो देखिए आगे हम लिखते हैं इसका. बिफोर फायरिंग the velocity of gun was zero. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. फायरिंग से पहले गन की वेलोसिटी 0 थी. and in 1 second gun gains a backward velocity equal to 48 N upon M. Okay, so acceleration, लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा. So acceleration of gun in backward direction is also equal to 48 N upon M. 48 N upon M. तो यहाँ हमने स्मॉल m लिख दिया, हमें कायदे से लिखना चाहिए था कैपिटल M. So force on gun equal to mass of gun into acceleration. Force is given 144, mass of gun is m, 48 n upon capital M, it will get cancelled. So 144 divided by 48 will be n. So we will get n equal to 3. We will get n equal to 3.
So this is a very simple way of solving the questions. और दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे. ओके, तो आप इसे लिख लें तो बताएं. नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड कितना आ गया? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड कितना आ गया? 3 आ गया. तो आप इसको एक मॉडल क्वेश्चन बनाइए और एज ए मॉडल क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करेंगे. Okay, we are going for the next type of question. लिखिए, a bomb is kept stationary. Stationary at a point. At a point. It suddenly explodes. अचानक से फट जाता है. It suddenly explodes into two fragments of masses 1 kg and 3 kg. If the velocity of fragment fragment is 12 meter per second, find the velocity of other fragment. तो अब देखिए, पहली चीज, इनिशियल मोमेंटम is 0. Therefore, final momentum is also 0. फाइनल मोमेंटम होगा for m1 v1 plus m2 v2 equal to 0. So m1 1 kg, velocity 12 meter per second, m2 3 kg, velocity v2 इसी को हमें निकालना है. तो 3v2 equal to -12. So v2 equal to -4 meter per second. So it is like that. 1 kg, 3 kg. If 1 kg will move this way, 6, and so 3 will move this way, opposite. 4 meter per second when the explosion takes place. They will move opposite to each other because final momentum is 0. So velocity of one fragment will be positive and that of other fragment will be no doubt will be negative.
अब देखिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे हम. We will develop one good formula. Okay, if you are done with it, tell me. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं. A bomb is kept stationary. It suddenly explodes into three fragments. If two fragments moves perpendicular to each other, moves perpendicular to each other, find the velocity of third fragment. ये कॉमन लैंग्वेज है जो एग्जामिनेशन में आएगी. तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करना है ये अब हम सीखेंगे. देखिए दिस इज P1. देखिए बॉम्ब वाज केप्ट स्टेशनरी, तो यहाँ थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा. सिंस द बॉम्ब वाज kept stationary, so initial momentum is equal to 0. Hence final momentum should be also 0. But listen, here we have three. Here we have three fragments and two of them are perpendicular. We will be needing more space to solve this question. तो हमें अगली स्लाइड पे मूव करना है. तो आप इसे नोट कर लें स्टूडेंट्स. Let the momentum of fragments are P1, P2 and P3. Two fragments moves perpendicular to each other. P1, P2, P net. So P net will be root of P1 square plus P2 square.
क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, रहना चाहिए कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और P1 और P2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हमने सपोज कर लिया let the net momentum of P1 and P2 is P net. So P net is given by root of P1 square plus root of P1 square plus P2 square, P1 square plus P2 square. So note it down this much. And tell me whether you have noted down or not. So you are noted. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. The momentum of third fragment should be equal to and opposite to it. Opposite to it. So that the final momentum, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो है, इन दोनों फ्रैगमेंट से मोमेंटम गेन कर लिया रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो तीसरे फ्रैगमेंट के मोमेंटम को इसको कैंसिल करना पड़ेगा. P1 P2, this is root of P1 square plus P2 square. So momentum of third piece, so P3 should be equal to root of P1 square plus P2 square. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. और इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये P2 है तो ये भी क्या होगा, P2 पैरेललोग्राम. तो tan theta can be calculated as P2 by P1 and this angle is, as a if I talk about this angle is 180. ये पूरा एंगल आपका क्या है, 180 है. तो इस ये एंगल क्या होगा, ये छोटा सा एंगल हमें दिख रहा है 180 माइनस थीटा. तो देखिए थर्ड फ्रैगमेंट, थ्योरी लिखिए, थर्ड फ्रैगमेंट. अगर आप थ्योरी नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा. थर्ड फ्रैगमेंट मूव्स at an angle 180 minus theta with the first fragment. और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब हम इस पे 2 या 3 कम से कम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स. एटलीस्ट वी विल सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस.
So you are done with it. ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, P3 स्क्वायर। अब देखिए कितनी जल्दी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये थ्योरी तभी अप्लाई हो सकती है व्हेन टू फ्रैगमेंट्स आर मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अदरवाइज आप इस थ्योरी को यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस थ्योरी। Okay, so I'm moving to the next slide. A question, we will take one question. An explosion blows a rock into three parts. Two parts go off at right angle to each other. At right angle to each other. These two are 1 kg. First part moving with a velocity of 12 meter per second. With a velocity of 12 meter per second, and 2 kg. Second part moving with a velocity of 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, its mass would be तो इसका मास आपको बताना है। तो सबसे पहले बता दें, आपको ये क्वेश्चन आया था नीट में 2009, repeated question 2013. We have got the 4 आंसर। जितना टाइम में हमने क्वेश्चन लिखा है उससे जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 kg, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला है। C is 17 kg and D is 3 kg. अब देखिए हमें मालूम है P3 स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हमें अप्लाई करना है। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तीसरा पार्ट का मास है m, वेलोसिटी है 4, पहले पार्ट का मास है 1 kg, वेलोसिटी है 12,
मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब दूसरे पार्ट का मास है 2 kg और वेलोसिटी है 8, तो इट इज 2 into 8 whole square. So you will get 16 m square equal to 144 256. 16 m square equal to 400, और आप स्क्वायर से लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। अब रूट निकाल लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट 4m equal to 20, m equal to 5 kg. So the answer is A. देखिए फॉर्मूला मालूम होने पर हम कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, वेरी क्विकली। So the answer is 5 kg. Okay, I think you are done with it. आप लोगों ने इसे लिख लिया। तो ये बहुत सिंपल था। हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया P3 स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन ये फॉर्मूला आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला तो भाई तभी लगेगा जब दो पीस 90 डिग्री पर मूव करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए P मीन्स मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। On the same lineup, we will do 2-3 questions. A shell at rest at the origin. At the origin explodes into three explodes into 3 fragments. Three fragments of masses 1 kg, 2 kg, and mkg. 1 kg and 2 kg flies off with speed 5 meters per second along x-axis and 6 meters per second along
y axis, ठीक है, along y axis respectively. If the m kg piece flies off with a speed of 6.5 meter per second, the total mass of shell must be. So we have got four answer, 4 kg, second answer 5 kg, third answer 3.5 kg, fourth answer 4.5 kg. तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. We have got the formula P3 square equal to P1 square plus P2 square. अब 6.5 देखिए मास m है, 6.5 को हम लिख सकते हैं 13/2. ठीक है, ये जो 6.5 है हमने इसको लिखा 13/2. अब P1 1 kg और x एक्सिस पे जा रहा है, x और y में 90 डिग्री होता है, 1 into 5 होल स्क्वायर. P2 2 kg और स्पीड है 6 along the y axis, 2 into 6 whole square. So we will get it 169 m by 4, 25 plus 144. 169 m by 4 equal to 169 cancel, so m equal to 4 kg. पर हमसे टोटल मास पूछा है, टोटल मास 4 plus 1 5 plus 2, तो फिर से आप इसको चेक कर लें. हाँ, तो दैट इज m स्क्वायर. m स्क्वायर इज 4, m स्क्वायर इज 4. देखिए यहाँ गलतियां होती हैं, हम m स्क्वायर लिखना भूल गए थे. वी शुड राइट हियर m स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो m इक्वल टू 2 kg. तो टोटल मास हो गया 5 kg, क्योंकि 1 kg और 2 kg ऐड करने पे 3 kg आएगा, 3 kg प्लस 2 kg. तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया. क्यों आसान हो पाया क्वेश्चन? इसलिए आसान हो पाया कि अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है. Now we have got a formula for such type of question. तो टोटल मास हो जाएगा आपका, तो टोटल मास तो लिख लेते हैं हम, 1 plus 2 plus 2 total is 5 kg. So the answer is B. अगर आपने इसे लिख लिया है तो आप बताइए. अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे. तो लेकिन एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है when two pieces, or you may say that two fragments moves perpendicular to each other. ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा.
ओके, तो फिर हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. विल डू अनदर क्वेश्चन. हम एक और क्वेश्चन करेंगे. अ ब्लॉक of mass m at rest explodes into three parts, two of which of mass m by 4 each are thrown off in perpendicular direction. In perpendicular direction with velocities 3 meter per second and 4 meter per second respectively. ये पोल क्वेश्चन है. पोल मतलब अब आपको इसको सॉल्व करना है. The third piece will be thrown off with a velocity of first answer 1.5 meter per second, second answer 2 meter per second, third answer 2.5 meter per second, fourth answer 3 meter per second. ओके, स्टार्ट करते हैं. अब मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करें. आई गिव यू टाइम. मैं आपको टाइम देता हूं. आई गिव यू द टाइम. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. 40 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको अलॉट कर दिया है. ओके, आई एम वेटिंग कि यहाँ कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं देखना चाहता हूँ. आंसर दीजिए. ए बी सी डी. पोल हैज बीन स्टार्टेड. पोल हैज बीन स्टार्टेड. यू नीड टू गिव द आंसर. या तो ए बोलिए, या बी बोलिए, या सी बोलिए, या डी बोलिए. 30 सेकंड्स. आप लोग कब एक्टिव होंगे? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए. देखा आपने, 3 बार क्वेश्चन हम करते हैं तो भी हमसे नहीं बन रहा. तो कितने रिविजन्स की जरूरत है? m by 4 into 3 m by 4 into 4 और तीसरा पीस m by 2 होगा क्योंकि m by 4 के 2 हो गए. एक चौथाई 1/4 मिलके आधा, तो ये होगा आधा. m by 2 into let's velocity is v.
तो सबसे पहले तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v3 स्क्वायर अपॉन 4, ये 3/4 का स्क्वायर है, ये 9/16 है। और एक बच्चे का आंसर से देने से लगता है एक बच्चा ही पास होगा, बाकी लोगों को पास होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 बचा। सो v3 स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 25/4। स्क्वायर रूट ले लीजिए, v3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट v3, 4 का 2, राइट हैंड से साइड पे जाओ, इसका 5, 4 का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा हमारा। we are doing some mistake. v3 should be 5, it should be 5। कहाँ गलती हुई है आंसर में, ये भी आप देख सकते हैं, where the mistake have occurred। अच्छा ठीक है, ये यहाँ हमने गलती करी है, ये देखिए 16 था, दिस इज 16, तो अब इसको करेक्ट कर देते हैं। 16 था और ये 4 16 को कैंसिल कर देगा, 4 16 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सो v3 स्क्वायर इक्वल टू 25/4, taking the square root 5/2, so v3 will be 2.5, so the answer is C। तो आपने देखा कि हम एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कर रहे हैं, तो भी हमारे को एक प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप इसे नोट कर लीजिए, तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑन व्हाट यू कॉल इट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओनली वन स्टूडेंट अप्लाइड। आप देखिए 3 बार करने पर भी अभी आपने 3 बार इस ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर भी आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। सुनना पड़ता है जब हम नहीं कर पाते हैं, आप करेंगे तो सुन आएंगे नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक और चांस आपको दे रहे हैं। स्टेशनरी बॉम्ब explodes into 3 parts. One part of 2 kg mass moves with the velocity of 8 meter per second, 8 meter per second at right angle to the other part, of mass 1 kg, moving with a velocity of 12 meter per second।
if the mass of third part is 0.5 kg, 0.5 kg, then its velocity is मैं तो 5 आंसर बना रहा हूँ. Okay, now it's your turn to give the answer. Definitely ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा. हाँ भाई, एक आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, लिख देते हैं. Only one answer has come. A question has आज 2 लोगों ने आंसर दिया है. मैं आंसर लिख देता हूँ इसके. 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड and 30 meter per second and 50 meter per second. Okay, only 2 students will pass. It appears. ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको पास करना है. I am not going to give you the answer क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ. सॉल्व तो आपको ही करना है. ओके, आपका अब 30 बच्चे ने आंसर दिया. 3 आंसर. इतने लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही आंसर देना चाहते हैं. अब चौथे स्टूडेंट ने आंसर दिया. 5वां. चलो, इतने दिनों बाद ये तो हुआ कि 5 बच्चे एक्टिवेट हो गए. बाकी सब लोग सो रहे हैं. ऐसा बोलना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा. द आंसर इज 40. 6 बच्चों ने आज इसका आंसर दिया. तो 7वां. ओके, तो आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. अभी एंड करते हैं. रिवाइज करिए.